पहले तो मैं दोनों को ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि यू टुक आउट द टाइम टू टॉक टू अस, एंड दोनों के लिए एक स्पेशल नोट एज वेल, मतलब स्पेशल ग्रैटिट्यूड एज वेल, बिकॉज आदित्य सर के साथ हमने लास्ट टाइम भी प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट हैड टू बी पोस्टपोन, सो सर सो काइंडली अग्री टू कम बैक अगेन. एंड एनएस विदाई सर, आपका तो मतलब यूर फॉर आवर ऑडियंस, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, and despite that, just because he had made a commitment to us that he'd help us learn about stock markets, he's, despite being in pain, he's here with us tonight. So both of you, I really, from the bottom of my heart, a special gratitude for both of you, sirs. So Thank you so much, brother, for your kind words. And honestly, NS Viday sir है यहाँ पे. मैं तो उनको सुनना चाहता हूँ personally, I would say. So he is 100 times more experienced and wiser trader. So I am really happy that he is also part of the space. Thank you so much for having me. Yeah. Aditya, and thank you, Vishu, for kind words. And yeah, I have a little toothache. Let's hope it doesn't flare up. So if it doesn't flare up, then we'll have a better kind of interaction, hopefully. absolutely. ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू बिल्कुल से शुरू करते हैं. सो आज का अगेन टॉपिक इज मार्केट क्या लगता है, तो सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं. देयर हैज बीन बिल्कुल शार्प मोर देन 45 डिग्री एंगल रैली फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स. पूरा अप्रैल 44% अप चला, एक मुश्किल से एक ब्रेक लेते हुए ऊपर की तरफ भागा, एंड देन अगेन थोड़ा सा पिछले 2 दिन में एक शार्प फॉल आया है, बट दैट might just be a normal course correction which was needed in the market after such a sharp rally. Would love to understand both of your perspectives कि क्या चल रहा है market में. What do you think is gonna happen? Is this the end of that sharp rally or is this just a correction? या wait and watch है, जो भी आपको लगता है. Would love to know, sir. So Viday sir को पहले जाने देते हैं. I think. Yeah. Absolutely, sir. Sir. Yeah. Okay. So if you look at Nifty, Nifty is actually making higher top, higher bottom, right? So logically, I hope most people understand technical. It's not, it is simple, it's making steps. Okay. So in a simple language, it is just they are trying to create steps, right? So you have one top and then you have a higher bottom. So logically, we are in that situation right now. Extreme short term, I believe Nifty should hold 18,000. If it doesn't, then there is more pain, and then we can head towards 17,600 approximately. Okay, so that would come into play. So that would still maintain a higher top, higher bottom in a way. So that is about Nifty. In case of Bank Nifty, what we are seeing is a double top formation. Now, usually double top formations, means when we saw that there will be some kind of correction, right? A little correction is obvious in that. But again, if you look at Nifty's chart, right, the rally has been, as you said rightly, it was sequential rally. There is no proper break in a way. So basically, I would say till we hold above 42,000, like nothing wrong. Overall, it's in good shape. If it comes to 42, rather it would be a good opportunity that means one can buy on dips around that area. Reason being, why I'm saying 42,000 is a little correction would go a lot of way to take this rally much higher. If there is no correction, then the rally would be much more painful, right? So best thing to happen is there should be a little correction. Like you said, everything in moderation is good. So same with index. If you see, Bank Nifty almost rose from 38,600 to 44,000. That is a substantial move. So a little cooling down is necessary. But when you look at this move, right, when you compare it to the move that happened from top to almost 38,600, when we made a top somewhere in 22 December, right? So since then the market corrected and came down very violently. But current rally is in a perspective, if you see, it is suggesting that bulls are in control. Reason being, it has been faster. It completed this whole up move in a shorter duration. So I am particularly bullish on banking stocks, financials for a longer duration also. So any breakout above 44,400 would be fantastic. But then right now we are looking at a little dip, and I would say
any dip would be a great buying opportunity. So yeah, that's my view on market. क्या लगता है, especially Nifty and Bank Nifty, that people want to see. So Absolutely. Thank you so much for sharing your analysis, sir. आदित्य सर, आपसे भी जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है. श्योर एनएस विदय सर ने पहले तो इतने स्वीटली और इतने सिंपल वे में समझाया, उनका नाम सिंपल ट्रेडर होना चाहिए वुड गेस. सो आई थिंक आई एग्री विद द व्यू, और मतलब मेरा थोड़ा सिमिलर व्यू है. सो उसको मैं एक दो चीजों के साथ आई जस्ट ट्राई टू मतलब से इन माय ओन टर्म. सो इफ वी सी निफ्टी जो है, जैसे मतलब सर ने भी बताया, सो अभी थोड़ा सा ये देखिए, हमारी जो ये रैली हुई है काफी स्टीप रैली हुई, 12 से 14% का वन वे मूवमेंट रहा है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, राइट. सो अगर ये रैली को सस्टेन करना है, एक पुल बैक चाहिए. अगर ये रैली ब्रेकआउट होके अगर हम हायर हायर मतलब सीधा ही करे जाते हैं, तो फिर फ्यूचर में बड़ा करेक्शन आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट. वो काफी अनसस्टेनेबल होता है, कोई भी न्यूज के ऊपर देयर विल बी सेल ऑफ. सो इफ यू सी अगर निफ्टी के लेवल्स पे, सो 18,050 एंड 17,800 के नीचे मेरे को जाता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है. जो है ऑनेस्टली कल के एक्सपायरी में हम वील स्टार्ट गेटिंग आइडिया. एक्चुअली फ्राइडे से पता चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी में भी वॉलिटिलिटी कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, राइट. एंड शॉर्ट टर्म पोजीशंस का जैसा मार्केट में मूवमेंट होता है, बट फ्राइडे एंड फिर मंडे से वील गेट अ गुड क्लैरिटी. बट 18,000 एंड 17,800 ऑन लोअर साइड से नीचे मार्केट जाता हुआ निफ्टी के टर्म्स में मुझे नहीं दिख रहा है. दूसरी बात मैं फंडामेंटली भी करूं वैल्यूएशन वाइज, तो हमारे इंडेक्स की वैल्यूएशन इतनी महंगी नहीं है ऑनेस्टली. अगर आप देखेंगे रूम फॉर अपसाइड इज काफी मतलब डिसेंट अपसाइड की पोटेंशियल है. अगर आप देखेंगे हैवी वेट्स में एचडीएफसी में और मतलब कोटक बैंक हो, और फॉर दैट मैटर मतलब बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं बात करूंगा, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज, तो ये पिछले 2-3 साल में सच बड़े नहीं है. रिलायंस भी फॉर दैट मैटर देखेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी के जो हैवी वेट्स है, जो रैली के अंदर पार्टिसिपेट पहले किया, तो 2 साल से इनका परफॉर्मेंस नहीं है. एंड इफ यू सी तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गया, और ये सब क्वालिटी बिजनेसेस जो फंडामेंटली बहुत अच्छे ग्रो करे कंपैरेटिवली, राइट. सो अगर एक साल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऑब्वियसली ये है, बट ये थोड़ा सा करेक्शन आया है मेरे हिसाब से, और यहाँ से वील गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, फॉर हाई चांसेस है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के. एंड दूसरा बैंक निफ्टी में भी हम बात करें, सो बैंक निफ्टी की जैसे फिदाई सर ने भी बताया कि ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हो रहा है. अभी ये क्या हुआ था, आई थिंक हम ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल टाइम हाई टच ही कर गए थे, जस्ट आई थिंक एक्सपायरी के डे की बात है ऑलमोस्ट. सो उस टाइम से वहां से थोड़ा सा करेक्शन आया था, और एचडीएफसी बैंक का न्यूज आ गया था अगले दिन पे, जहाँ पे एमसीआई इंडेक्स में उनका कुछ आई थिंक $160 मिलियन का आउटफ्लो हो रहा था. उस वजह से वो स्टीपली करेक्ट हो गया था. अदरवाइज ये रैली शायद इतनी मतलब और थोड़ी स्ट्रांग हो सकती थी. सो ये टेम्पररी चीज है, और एचडीएफसी बैंक का और ये मर्जर का भी ऑलरेडी चालू है. सो विद इन मतलब फ्यू वीक्स बहुत हाई चांसेस है कि थोड़ा सा पुल बैक आ जाए. बैंक निफ्टी के अंदर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से हम 42,600 तक लोअर साइड पे आ सकते हैं. वहां से वील सी अगेन मतलब अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए. सो ये मतलब मेरा ये व्यू है, बट मेरे को लग रहा है दोनों इंडेक्स में ऑल टाइम हाई सोन आ सकते हैं. ऑसम ऑसम. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये तो हुई मार्केट की बात, कि मार्केट में क्या लगता है और क्या होने वाला है. सेकंड क्वेश्चन मेरा दोनों ही हमारे एक्सपर्ट से आज गेस्ट से ये है कि व्हाट डू यू जनरली डू इन द मार्केट्स. ऑफ कोर्स वी हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, बट इट वुड बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम योर ओन, इन योर ओन वर्ड्स, कि आप मार्केट में क्या करते हो. फिदाई सर, अगेन आपसे शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर जनरल ट्रेडिंग स्टाइल इन द मार्केट. ऑफ कोर्स जैसा कि आपका प्रोफाइल भी कहता है, यू लाइक टू इन्वेस्ट एंड नॉट trade, but still मतलब what do you see in the markets and how do you trade? Right. So basically, I follow very simple systems. I am a price action trader. So I believe price is the ultimate truth in market, right? भाव भगवान है बोलते हैं, तो I have just converted into English. What I'm trying to tell you is कि I look at price and then I look at moving averages. And because I have been practicing and maybe working on moving averages for maybe more than 2 decades, right? So basically what I have seen is moving averages people feel are a lagging indicator, but for me and the way I see it and way I understand them, they sometimes give you an means early indication if you know what you are seeing. So basically it's like you can say
Markets may, I always prefer to go with, bullishness rather than, bearishness. For the simplest, मतलब maybe वो जन्म का भी तकलीफ है. I was born as a Taurian, so I was born a bull actually. So that is also one of the reasons probably I would say. But I believe there are battles and there are wars. It's bull who win the wars, right? And bears win the battles, small battles in between. Even if you look at historically, I say if you are going to invest and if you don't want to do anything much in market, no daily trading, no daily time pass, no reason to, if you don't want to watch, if you are busy, if you are working, then what you can do is you can just invest in index ETF. I'll explain why. Index ETF, for the simplest reason, if you see, Sensex has a longer history, right? So since 1979, Sensex base was around 100 when it started. Until date, it has touched 60,000 and beyond, right? So that is a fantastic move if you consider in last so many years. Like it is almost like 44 years and we have generated some 600x, 6,000x, 600x, yeah, sorry, 600x. So that's crazy kind of returns. Now, it's not that the Sensex has gone up vertically, right? And Sensex is, if you see, a mirror image of Nifty. So even if you invest in Sensex or Nifty, it would be fantastic. You don't have to worry. You can do sipping, you can do bulk buying once in a year, maybe, or multiple times in a year whenever you see a major correction in the market. I call this as a Mrutyunjay kind of investment. I hope people understand what is Mrutyunjay. Mrutyunjay means somebody something that cannot die, right? Like let's say you invest in any of the stocks. At one time, Yes Bank was into Nifty, it was into Bank Nifty everywhere, right? It was supposed to be the bluest of blue chips, and then what happened, right? We saw it go to double figures, and maybe right now also it is not in great shape. So basically, if you see, index-based stock can also fall. There are many examples. I have just taken one, and what happens? You can lose money if you are invested in a particular stock. But if you are invested in the index cannot go to zero. For the simplest reason, at some point where the stock which has underperformed will be replaced by another stock. So it's like अगर आपकी body में एक part नहीं काम कर रहा, so what they will do is they will replace it with a better and much more stronger part. So logically, that's what index. That's why index investing is called Mrutyunjay according to me. So that is one thing. Second, you asked me why whether I trade or not. So I do trade, but it is purely like I would say non-discretional kind of thing. I look at particular things, and whenever there is an opportunity, when it is presented, then only I trade. So it's like I trade the cash market mostly, and then I prefer cash market much better than frontline or even index in particular for trading. But if I have to trade, if you ask me the question, if I have to trade, what will I trade? So my first choice would be Nifty. Okay, and then second choice would be Bank Nifty if I have to trade. Reason being, if you see Nifty and Bank Nifty, the volatility is pretty low in case of Nifty in comparison to Bank Nifty. Now, if you look at stocks are hyper volatile. They can drop 5, 10, 20% on whim and fancy of whatever the markets, right? Can happen to the stock or to the sector, right? And it could be function of so many things. Like the whole audience, if you ask anybody, nobody must have seen index correct more than 20% on a single day in their lifetime, right? So it's very rare. Even if you have seen, maybe it's once in 2-3 decades kind of thing. So 4-5%, 8% probably is maximum that index can fall on a worse kind of day, right? So the beauty of trading with the index is
you can control your risk easily, and you don't have to worry about going bankrupt unless you have very bad risk reward and very bad money management. If that is the case, then you can go maybe to bankruptcy in maybe just 100 points fall. It's like we have seen people, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में 3 फुट में भी डूब सकते हैं. तो मतलब if you don't know or if you are not doing the right things, you can go to zero very easily if you are too much leverage. So I request most of the listeners who are there, avoid leverage as much as possible. If you have to take it, make sure that you have a perfect money management in place. And what I do is usually I go by whatever I see on index. Basically it's moving averages only. So I have many times in open forums also mentioned about my particular moving averages that I use. I use 4, 9, 18, 50 and 200. I'll repeat again: 4, 9, 18, 50 and 200 DEMA, or any time frame. If it is whatever the time frame, it would be exponential moving average. So that's what I use. And based on whatever I see, usually I wait for a convergence. If that happens, then I would be looking out for a breakout or a breakdown that can happen after a convergence. Basically, it is nothing but you can say it's a VCP, or you can say it's Bollinger Band mein jaisa. You have this contraction. It's convergence is something very similar, where all moving averages seem to be together, and they are almost at you can say within their each other's very, you can say less than half percentage zone. The range of all moving averages should be within that, or even lesser if possible. Like I would visually see them rather than look at percentages. But some people would like to do it discretionary, non-discretionary kind of thing, where they want to set up an algo or something. Then they can put numbers which are lower than 0.5% probably. So that's what I look out for. And once that happens, then I know that the markets will move on in either direction. So whenever the direction is decided, and I will also tell you how I decide on the direction. Direction is basically when you look at swing high or a swing low on whatever time frame. It could be 5 minutes, it could be 1 minute, it could be 1 hour, it could be 4 hours, or it could be daily chart. So whenever the swing high or swing low is taken out, logically, I would say the trade has begun. As simple as that. So, means you wait for convergence of the moving averages. Then once you see the convergence, the next step would be to wait out for, swing high or swing low to be taken out. So if swing low is taken out, it's a short trade. If swing high is taken out, it's a long trade. So that's what I do, but I'm not very persistent or consistent in this kind of things, because I believe my time is more valuable than trying to look at making few rupees in market in intraday. Rather, like I have a good time with analyzing charts or maybe speaking to my mentees. So I do promise my mentees that my time is their time. So I believe whenever they call, I should be available, right? So that is the reason I don't trade too much. But even if I trade, I am very clear. I have decided what is my stop loss, when is my entry, and what is my target. Based on that only I trade. So seriously, it saves me lots of time. I don't have to worry. I don't have to look at markets. And my position size would be very nominal, because I don't believe in taking too much leverage. Okay, so I hope this little interaction would have helped the people who want to trade markets. You can check this whole concept on any investing or whatever platform you use, even your broker's platform, where you can make charts. You can use those moving averages. Look out for where they become one. Like convergence is nothing but I'm clarifying it, because many times I get so many charts where I don't see convergence and people feel it is a convergence. So I'm just trying to make it very clear. Convergence means sangam, to meet. Okay, so when moving averages meet
or seem to meet, and not they should not be very far away from each other. It's not about price or it's not about candle, it's about convergence of moving averages. I hope I have been very clear about it. So hope it helps the community also. It was beautifully put, sir. Very simple system, and yet absolutely awesome. I have just one more questions around it. So very clearly understood. So one, just to summarize what you said, one is ki ETFs and Nifty ETFs and overall market indices में invest करना is a great option for retailers जो कि बहुत time नहीं dedicate कर सकते हैं. And investing is of course a long term great game. Second, trading usually, although you usually do less, but आप generally conversions देख के उसमें थोड़ा सा करते हो. जी. Sir, एक चीज what I would love to ask you is exits. So you briefly touched upon it कि आपके targets and stop losses पहले से ही defined होते हैं. Targets, Yeah. I don't define targets. Okay. I let it like I let it run. Right. For the simplest reason, उसमें sir I आता think कैसे मतलब how I'll is tell it you. percentage defined stop loss या कैसे exit decide करते हो sir आप? Yeah, I'll tell you. So, basically, if it goes below 18 EMA, if you are trading and price goes below 18 EMA, you can exit. There are other ways also. The other option is to wait out for a crossover of 4 below 9 or 9 below 18, whatever depending on your view for a particular index or particular stock. So stocks, it should be smaller moving averages. 4 going below 9, that would be end of extreme short-term trend. So what I'm saying, when 4 EMA goes below 9 EMA, then you exit that trade, and the trade is mostly profitable. Okay, and very rarely you can lose money. Another thing is, when you enter a trade, your stop loss is clearly defined from the very point, like the swing low would be a stop loss. So sometimes it is very deep. So, but if the swing, just imagine if there is a move, right? The swing low could be maybe, let's say, 200 points away. But in case of Nifty, I can show you in extreme short term, right? There was a beautiful move that happened. I'm showing on shorter time frame. See, convergence happened somewhere around, what do you call? Let me see the exact number. Yeah, Nifty was somewhere on 28 March. Okay, and the swing high that was crossed was around 40,140. Okay, and if you are looking at multiple time frames, then seriously it has not broken major swing highs or lows. So you are holding it for such a long duration. So just imagine the risk would have been nominal and reward would have been exponentially good. So you would have entered around 40,200, and based on 4 goes below 9, if I say, then it gave you something like 40,900 exit. If you are looking at 9 below 18, then maybe 40,900. So your stop loss was probably 39,000. Okay, 39,300 when you entered at 41, 40,200. 40,200 and 39,300. So that was 1:1. But you never know, because you right now, if I see, if you can exit at multiple reasons, right now still, my system has not given a sell signal, because my stop loss would be the strongest moving average, that is 200 DEMA. So there was a convergence of 5 at that point, and 200 DEMA still is away at 42,820. So just imagine you entered at 40,200, had a stop loss maybe 900 points away. But currently your trailing stop loss is at 42,800. That is 2,600 points. You are in profit even if stop loss gets hit tomorrow. So, it depends on what sort of investing you are doing or trading you are doing. Here I basically watch out for swing trades and that's how I trade this. You could exit when the price goes below 50 EMA also. So there are multiple ways to exit. You can, people can select according to their risk profile and their, maybe
comfort level, I would say. So I hope it is very clear now. Or do you have still more query? एब्सोल्युटली क्लियर सर। मेरे को एक चीज जो बहुत अच्छी लगी दैट वाज इनफैक्ट आज ही मैंने भी एग्जैक्टली वही चीज नोटिस करी थी सर जो आपने अभी बताई 28 मार्च। आई पिन दैट ट्वीट आल्सो दैट सिंस 28 मार्च दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट 9 EMA के बिलो क्लोज किया एनएफटी ने। सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट माई सेल्फ कि कहीं मैंने ऐसी खुद की एनालिसिस करी जो कि आपने भी नोटिस करी, तो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट सो फार। Yeah. So I was talking about 1 hour chart. Yeah. So basically the moving averages are very beautiful. Yeah. I think you need to use it because we'll have a echo back. Yeah. So moving averages are so beautiful. If you look at means various time frames, you will see there is so much to learn there. That means I would say like if you put some time into learning, and learning is nothing but looking at them. Once you start looking at them, once you start knowing what moving averages are telling you, then things become so easy. And then you can use, you don't need much indicators. Maybe sometimes I add RSI just to understand whether we are in a overrated zone or we are in a means overbought or oversold zone logically. And then based on that you can means reduce your whipsaws also. Yeah, Vishnu. Awesome. Thank you so much for sharing so much wealth of information and wisdom with us, sir. Okay. Moving on to Aditya sir. Sir, would love to understand your setup as well. Sure. So विष्णु, मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में ट्राई करूंगा बताने का। पहले तो ऑडियंस को ये भी समझना जरूरी है कि अभी जैसे फिदाई सर ने इतना अमेजिंग सेटअप बताया, मैं पर्सनली भी मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, एंड उन्होंने एक चीज ये स्पेसिफिकली बहुत अच्छी बताई है कि आप चार्ट्स को देखिए और अलग अलग ड्यूरेशंस में आप जैसे अगर वीकली, डेली या तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी आप देख रहे हैं अलग अलग मूविंग एवरेजेस के साथ में आप जस्ट चार्ट्स को देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द कंपनीज, कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे सर्टेन टाइप के स्टॉक्स मूव होते हैं, एंड वो सेल्फ लर्निंग होगी तभी ही यू विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, राइट। सो वो एक सेल्फ ड्रिवन चीजें होनी चाहिए। अभी बात करते हैं मेरे सेटअप के बारे में, ठीक है। सो मेरा थिंकिंग में ऑप्शन जो अभी मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ और एक ट्रेडर भी हूँ। सो आई हैव बीन इन्वेस्टर इन मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 10 years एंड मैं हार्डकोर वैल्यू इन्वेस्टिंग करता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ट्रेडिंग करीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। उसके पीछे का भी मैं आपको दोनों चीज का एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में लॉजिक बताता हूँ। इन्वेस्टिंग इज पैसिव फॉर मी नाउ। अभी आप एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो इट्स थोड़ा वो भी एक्टिव हो जाता है, बट मोर और लेस आप एक कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं देन यू जस्ट नीड टू होल्ड फॉर फ्यू इयर्स और इवन डेकेड्स, राइट। सो एज सच आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। और अगर आप कंपनीज में नहीं कर रहे, अगर आप इंडेक्स में भी डाल रहे, सो आपको मैं बताता हूँ। अभी जैसे सब जन बोलते हैं कि निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। यू शुड इन्वेस्ट इन निफ्टी 20। अगर आप खाली 50-50 का एलोकेशन करते हैं, 50% इक्विटी 50% डेट, यानी आप क्या करें 50% निफ्टी 50 में डाल रहे हैं और चाहिए तो नेक्स्ट 50 में आप जो भी एलोकेशन कर रहे हैं, बट 50% आप इक्विटी में डाल रहे हैं एंड 50% डेट में डाल रहे हैं, दोनों का कंबाइन करेंगे तो जब भी क्या होगा, एंड आप खाली वंस अ ईयर रीबैलेंस कर रहे हैं। यानी आपने जनवरी में डाला, दिसंबर में आप देख रहे हैं इक्विटी 60 हो गया, डेट 40 हो गया, रीबैलेंस करके 50-50 कर दो। खाली आप ये मैट्रिक्स से अगर आप करते हो और सालों साल करते रहते, आपका जो होगा ड्रॉडाउन्स कम हो जाएंगे। एक तो जैसे अभी कोरोना का फॉल आया था या कुछ भी आया था, सो जब भी मार्केट बड़ा टैंक करता है तब आपके ड्रॉडाउन्स कम होंगे एंड आपके रिटर्न स्टिल ऑलमोस्ट इक्विटी जितना आ जाएंगे लॉन्ग टर्म में विथ लोअर ड्रॉडाउन। So you will be able to hold the equity ये। So asset allocation method में आप काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। आपको समझ में नहीं आता आपके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म पैसा 50% इक्विटी में डालो, 50% डेट में डाल दो, हर साल रीबैलेंस कर दो, या तो मार्केट में जब सस्ता हो जाता है तब रीबैलेंस कर लो, इट्स अप टू द यूजर, ठीक है। सो ये चीज हो गया अभी मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट। अभी मेरे को पता है अगर ये चीज मैं करूंगा 10 से 12% रिटर्न मेरे ऑन एवरेज ईयर ऑन ईयर आ जाएंगे। नाउ दिस इज सेट एंड डन। अभी what I did is, so I came into options and specifically options selling. So वो मेरा comfort zone था। उसका एक ही रीजन पहले ये था कि अभी मेरे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है, अभी उससे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आने नहीं वाली है, डेट इज ऑन अ फ्यूचर डेट, मे बी 2 साल 3 साल हम शायद कमाए भी ना। एंड दूसरा पार्ट जो है
मेरे को अपने इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो को ग्रो भी करना है, मतलब मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए थी जहां से आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दैट मनी एंड क्रिएट अ इवन बिगर पोर्टफोलियो, राइट? सो therein when I started with option selling. ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मेन चीज आप अपने ब्रोकर के पास ही जो है अपने पोर्टफोलियो को प्लेज कर सकते हो, यानी आपने वो गारंटी के तरह दे दिए एंड यू गेट अ मार्जिन, राइट? अभी ये मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क सच जो था, राइट? मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है एंड मैं जो हूँ, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कुछ ट्राई किया, डायरेक्शन ट्रेडिंग ये वो, बट मेरे को नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में स्वीट स्पॉट मिला। उसके अंदर कैसे, बेसिकली आप कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, यानी आप बैलेंस पोजीशन रख रहे हैं एंड आप एक्सपायरीज पे भी अगर मैं इवन वंस अ वीक 0.25% का भी रिटर्न निकालता हूँ, अगर वीकली वाइज में बता रहा हूँ जो है, राइट? तो मेरा 1% का बन जाता है। यही 0.5% पे निकालता हूँ तो आई एम अर्निंग 2% अ मंथ। 2% अ मंथ ऑन अ बिगर पोर्टफोलियो, साइजेबल अमाउंट हो जाता है, जिससे मैं अपने जो प्रॉफिट को जो है क्वेश्चन करके जो है मतलब इन्वेस्टिंग में कर सकता हूँ। सो ये एक्सपायरी पे नॉन डायरेक्शन मेनली स्ट्रैंगल जो है, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ और मेरे को स्ट्रैंगल सबसे ज्यादा सूट किए। जब उसका मार्केट कैसा होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डू ओनली वन थिंग, यू इवन इफ आपके सिस्टम का एज ना हो, यू स्टार्ट डेवलपिंग एन एज, मतलब आपको पता है कि कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं अभी 2 महीने से प्रीमियम्स नहीं है मार्केट के अंदर, स्टिल आई एम एबल टू सर्वाइव एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो तो ग्रो कर ही रहा है। ये तो मेरे लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, ना कि प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? सो ये माइंडसेट से आई ट्राई टू बैलेंस बोथ, है कि मेरा पोर्टफोलियो 6 to 12% का, मतलब 6% का जीडीपी ग्रोथ हमारे कंट्री का होता है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंपनी, ग्रोइंग कंट्री, और 6% का जो है इन्फ्लेशन आ जाता है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म एवरेज इक्विटी का 12% का रिटर्न आ जाता है। नाउ आई ट्राई टू अर्न 2% अ मंथ एडिशनल, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पोस्ट टैक्स 26% भी मैं कमा पाऊँ, तो एवरी 3 years में मेरा पोर्टफोलियो डबल होता है। सो दैट्स द ब्रॉड आइडिया एंड दिस द काइंड ऑफ सिस्टम आई ट्राई टू डू। awesome. Thank you so much for explaining that. Same चीज आपका सर, आई थिंक आप सेलिंग में हो तो आई कांट मतलब आपके आगे आई गेस टारगेट्स तो पहले से ही डिफाइंड हो जाते हैं, बिकॉज वो टारगेट्स डिफाइन नहीं होते, राइट? सो विष्णु जी आपको आई थिंक म्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे टारगेट्स एज सच डिफाइंड नहीं होते हैं, मेरा डे का लॉस एपेटाइट डिफाइंड होता है। सो अभी जैसे, सो आई टेल यू फॉर अ सिंपल थिंग, अभी मेरा सपोज आई ट्राई टू अर्न ऑन मंथली बेसिस पे 3 to 4%। सो ये मेरा मंथली एज सच टारगेट नहीं है, बट ये मोटा मोटी एक एवरेज होता है, राइट? ऑन एवरेज मेरे पास के परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 5 to 6% का एक ब्रॉड रेंज रहा है। उसके अंदर टफ मंथ्स भी आते हैं, नॉन टफ मंथ्स भी आते हैं, जैसे पिछले 2 मंथ्स थोड़ा टफ चल रहे, 1.5% ही बना, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। बट अगर आप देखेंगे डे वाइज, आई नो सपोज ऑन एवरेज ऑन नॉन एक्सपायरी डेज आई मेक जस्ट 0.3%, तो आई एम नॉट विलिंग टू लूज मोर देन 0.5%। अब क्या होता है कि स्ट्रैंगल्स है जो मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ, आई नो कि 10 में से 7 बार मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, 1-2 बार ओके ओके रहता हूँ, और 1 बार मेरा लॉस होता है, या तो 2 बार मेरा लॉस होता है, 8 बार प्रॉफिट होता है, उसमें 4 बार बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, 4 बार ओके ओके प्रॉफिट होता है, राइट? सो आई नो माई सिस्टम की 80% मतलब मेरा ऑलमोस्ट विन रेट होता है 80-85% का। सो मेरा कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी खाली ऐसा नहीं होता है, मेरा लॉस डिफाइंड रहता है एक्सपायरी के डे पे। आई इवन टेक अ रिस्क ऑफ 1.5 to 2% बिकॉज मेरा एवरेज रिटर्न जो होता है हाफ से 1.5% के दे पे होता है। सो वो टारगेट मेरा होता है, और जितना बढ़ जाता है प्रॉफिट क्वेश्चन, जैसे मैं मॉर्निंग में बिल्ड करता हूँ, उसको आई रिस्क एंड ट्राई टू अर्न एडिशनल रिटर्न। सो वो मतलब दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच आई फॉलो एंड आई ट्राई टू कीप माई ड्रॉ डाउन एज लो एज पॉसिबल। सो हिस्टोरिकली मेरा ड्रॉ डाउन 3% का आ रहा है, एंड अगर आप ऑन एवरेज मतलब 4-5% कमा पा रहे हो तो इट्स एक्सेप्शनल, मतलब आपका 50-60% CAGR से हो रहा है विद लोअर ड्रॉ डाउन। सो मेरा ड्रॉ डाउन पे प्रायोरिटी रहती है, ना कि रिटर्न्स पे। awesome. That's great to know, sir. फिदाई सर, आपसे भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ऑल्दो यू आल्सो ब्रीफली टच्ड अपॉन दिस टॉपिक, कि आपको अपना जो है ओवरऑल अपना ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए कैपिटल, आपको विद इन द लिमिट्स करना चाहिए, बट रिस्क मैनेजमेंट पे भी इफ यू कैन आल्सो से अ फ्यू वर्ड्स, स्टॉप लॉसेस एंड के अलावा कुछ, कि कैसे मतलब नॉर्मल रिटेलर शुड मैनेज देयर रिस्क। Sure. So basically, if you see, risk is what you can lose, right? And one thing, think of market, being in market as a businessman. So if you are going to
trade in markets or invest in markets, you need to know that when you set up a business, there is some, means upfront costs that are involved with any kind of business. So, be ready to lose a particular sum, thinking of it as though it is your initial capital to be used in any business, right? So it could be you are learning formally or informally in any way. जैसे आप कोर्स करके सीखते हो या फिर आप मार्केट को देख के सीखते हो, राइट? Whatever way you want to learn, and that is the money that you spend in market actually, and that is your first initial capital. थोड़ा सा हमको लगाना पड़ता है, right? And nobody can say that they have not learned by paying markets or by paying to somebody, right? So it's very rare. Though I am a self-trained, technical analyst, I have been belly up twice in my life, right? That doesn't mean I lost everything. घर नहीं बेचा मैंने. But yes, मेरा initial capital या profits पूरा चला गया था. At one time there was when I started, I was down 90%. That was my initial 5 lakh rupees in 1990. Sorry, not 1990. That was when I started actually in the market. That was beautiful period because that was pre-Arshad Mehta, so you couldn't lose money. So when I lost money was when I started again as a technical analyst. That was in 2004. Okay, so 5 lakh initial capital became almost 50,000. So that kind of money market can take away from you, and some people may even spend more or give more to market. So very important, how much can you afford to lose is the first question that you should ask yourself, because risk define करना बहुत important है. What is my capability to lose money, right? And if you are on leverage, that is if you have taken a loan or you have a margin funding in the account, right? You are actually trading on borrowed capital. So let's say you had 100 rupees and you took 200 rupees as loan. Now if you invest and if you go right, you get 3x the capital. Means आपको पैसा मिल सकता है आपके initial capital पे. But if you go wrong, only 30% can kill you and bring you down to zero. So that's why I don't recommend, like, initially people who start in market, who are very new to market, they should never use leverage. So they should avoid FNO, absolutely. Even if you have to do FNO, you have to have enough money in your pocket to cover up for at least whatever the losses, mark to market losses market can present to you. And it's very obvious, समझो हमारे को 10 लाख का रिलायंस लेना हो और हमारे पास 10 लाख है, तो आप FNO में लेते हो तो कोई इश्यू नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम 10 लाख का, सी इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट रादर देन एनीथिंग एल्स. If you had invested 10 lakh rupees and Reliance goes from 2,400 to 2,000, you won't feel much pain because 400 rupees आपने पहले से ही पे कर चुके हो मार्केट को, 2,400 में लिया था. It's just on book you are losing 400 rupees for that much shares, right? But assume आपके पास 10 लाख रुपया था, आपने FNO में लिया. Now 2,400 का 2,000 होता है, तो M2M जब भरना आता है तो दिमाग पे you feel a stress on that, because you have to pay that way. Seriously, it is all about a clear mindset. अगर आप पहले से सोच लेते हो कि 10 लाख रुपया मुझे मार्केट को, मतलब उसमें रिलायंस ही खरीदना है, and I feel Reliance should go to 3,000 or 5,000, whatever. I'm just giving an example. So I can wait for 2 years, 3 years, and even if it comes in 5 years, I would be beating most of the bank returns and whatever the returns in any other segment I can generate, right? So if that is the case, you can, means you need to pay up जो भी M2M है, फिर भी आपका 100% पैसा नहीं लगता है मार्केट में. तो अगर आप ये पहले से डिसाइड करके चलते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप FNO करना चाहते हो तो. But my serious, this thing request to all the new investors is avoid FNO till you can, you have learned the system, you know what to do, and you know how to take risk. Now, very simple, I'll tell you, with 3:1 risk reward ratio, means I'm just imagine if you had 3 right trades, you would be almost breaking even.
out of 10, if you take 3 right trades and 7 wrong trades, you would be breaking even. Okay. But if you had, just imagine if you can improve with your, on your skills or your learnings from whatever way you have learned from market, if you can get it to 3.5 also, you would be in a nominal profit. And if you can go to 4, 1:4 risk reward ratio, then you are making profits and you will never be in a loss. Right. So it is very important here that you don't only trade based on technicals, because purely technicals is like, I wouldn't say that is wrong, but if you can add technicals along with fundamentals, it is like Sone pe Suhaga. For the simplest reason, let's say you bought Reliance based on technicals. Reliance falls from 2400 to 2360, your stop loss gets hit, you took a loss, you exited, and it was within your control, so you're okay with it. But just imagine after a few months, you will see Reliance going to 2500 or maybe 2600. So if you are invested in a fundamentally good counter, and if you had proper risk and money management, now risk management is something that people understand when I say stop loss and all that, right? Money management is more important than, I would say, risk management, because how much you do, create a position size per stock, that defines your, means how long you'll survive in the market. See, just generating profits, looking at profits is not the important thing. Also very important to understand, like, going in the whole thing as a systematic investor or trader, where if you define what will be your money management, how much position will you take on any stock, okay, based on that, if you do that, then seriously there shouldn't be an issue in life. You will survive for very long, because in markets, if you survive, as I say in my tweets also many times, no capital markets. So very important to conserve capital, very important to survive in market. So if you are able to survive, then there will always be good times, because by that time you would have learned your lessons given by the markets, and also learned how to generate profits from the market. And good times, in bull markets, everybody is a winner. Seriously, when there is a serious good bull market, right? It's only like, when there is a connection, then people feel there is a kind of stress in the market, right? So हर 5 साल में you will get a bull market. Okay, हर 8 साल में एक बड़ा fall आएगा. That can give you an opportunity. If you wait for, let's say, if you don't want to invest right now, you feel this is an overheated market, maybe wait out, like 2020 जैसा हो गया, या 2008 हो गया, या 92 हर्षद मेहता पीरियड हो गया, या even 2000, year 2000, Y2K. So, if you look at this, almost 8 to 10 years, there would be one major correction in the market. If you do not lose your senses, and even if you buy at that point, because most of the time क्या होता है, when markets are falling, people are afraid to invest in market, and they feel और नीचे जाएगा. So, if you know a little bit of fundamentals, try to buy quality stocks. If you don't understand quality, just buy any top, maybe 10 stocks random from index, probably Nifty 50 stocks. Or if you are not comfortable, or if you don't have that kind of capital, I have seen random portfolio perform more better than, the way people put lots of effort and create a portfolio. And if you want to see kind of actual performance of a random portfolio over a period of time, you can just search Nuresh, NOORESH, and put random portfolio and in Google, and you will see that Nuresh on his blog has posted
random portfolio wala, and every time the random portfolio has beaten all the indices. So what I would suggest is, when markets go down sharply in 8 to 10 years, be in your senses. If you have been not investing, that is the time to maybe book out your FDs or whatever you have, wherever you have placed your money, liquid money, put it in the market at that point. And I'm telling you, you don't have to look for next 5-7 years. You will be making like crazy money, unbelievable money. Just investing in random stocks also can work well. So if you know fundamentals, I would say, and based on fundamentals, if you can find, because at that point everything would be like, dirt cheap. Like I'll tell you, Y2K हुआ था तब market was down almost 60%. Harshad Mehta, market was down 60%, more than 60%. 2008 banking crisis जो हुआ था, global financial crisis, markets had fallen 66%. And during COVID, market had fallen 44%. Just imagine, अब इसमें क्या number सबसे छोटा है? 44. If you see 40% fall, just grab whatever you can. और नीचे के 20-30% भूल जाओ, doesn't make any difference. In next 3 years, 5 years, you will see your money multiply like crazy. And you can do it every 10 years. And exit when your money is 3x, 4x, start exiting, or maybe you can, book out part and let, the profits run for you. You can do so many things. So market is a very simple place, very good place. Problem is we have, too much, what do you call, expectation from market. We want to trade every day. I call trading every day like, road majuri karo, road paisa kamao. या तो फिर swing trading करो, that is a better thing, because that gives you peace of mind. Or you invest in various ways, like I showed you Mrityunjay, then another 8 to 10 years बड़ा सा fall आता है, तब 40% fall देखो, 35% fall देखो, वहां से सिपिंग चालू कर दो पीरियड से. अगर 60% भी जाता है और आपके पास समझो 10 लाख रुपया है, तो every 5% you start investing, और डिवाइड कर लो 5 टुकड़े में, ज़्यादा से 66% तक गया है, 44 इज द लोएस्ट. तो आप कितने इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो उतने में कर लो, तो यू कैन डू सिपिंग ऑल्सो, एंड योर रिटर्न्स विल बी unbelievably good. You can just invest in index also, as I told you. So there are so many ways to define your, what you want to do. Majority of us are basically, I will tell you, are working somewhere, have businesses, or are working in some employment. We aspire to become traders. Very few people can become successful traders, because again it is about mindset, about managing that kind of money. Managing few lakhs is very different from managing few crores, and managing few 100 crores is much different from managing 1,000 crore. So it's all about mindset. It's all about how do you look at markets, do you understand all those things, and you have learned your lessons. Do you journalize? Because journalizing is most important aspect of trading, which I find many people are not able to do it. When you journalize, you are actually saying, I am trying to become more disciplined. I want to understand what went right and what went wrong. So ये सब चीज़ें बहुत important है. पोजीशन साइज बहुत पहले से क्लियर कर लो तो बहुत इजी होता है. और एक पोजीशन पे आप कितना पैसा तोड़ सकते हो? 30%. तो आपने अगर समझो 8% लगाया है और 30% फॉल आता है उसमें, आई एम सेइंग 8% ऑफ योर कॉर्पस, 30% तो स्टॉक में फॉल आता है, तो यू आर लूजिंग व्हाट 2.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल. So it's not huge, right? So you can survive. You can survive for a very long time. Awesome. Thank you so much for that in-depth wisdom, sir. Sir, अब हमारे पास टाइम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन सो मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, तो छोटा सा मैं बस एक क्विक फायर राउंड ऑफ क्वेश्चंस करना चाहूंगा हमारे दोनों गेस्ट से, एंड लेट्स कॉल इट अ रैपिड फायर एक्चुअली. इसमें मैं बस छोटे छोटे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके आंसर्स मेरे को चाहिए होंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन ओके आदित्य सर आपके लिए है. व्हिच इज योर फेवरेट बुक इन द रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स? Psychology of Money, hands down. Awesome, thank you.
Fidai sir, who is your favorite trader or investor historically in the stock markets? Seriously difficult question, but I would give that award to my nephew Nuresh Mirani. Awesome. Thank you, sir. घर में होना चाहिए तो All right. Aditya sir, which is your favorite stock ever? Like एक छोटा सा bias में भी जिसके लिए हमेशा दिल में रहेगा. मतलब स्टॉक पे अगर आप बोलेंगे ये मतलब काफी डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब एवरी टाइम आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, बट एक कंपनी हमेशा से मेरी फेवरेट रही है. मतलब एक कंपनी जो मैं पोर्टफोलियो में रखना चाहूंगा, दैट वुड बी नेस्ले. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन हो या कुछ भी हो, दैट इज वन फेवरेट कंपनी ऑफ माइन. Awesome. Okay. फिदाई सर, आपने ऑलरेडी आई थिंक इस चीज पे थोड़ा सा टच अपॉन किया ही था, तो लेट मी टेक अ गेस टू योर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आपका फेवरेट इंडिकेटर, तो दैट वुड बी ईएमए. Right. ओके. उसमें भी सर किसी पर्टिकुलर, यू सेड कन्वर्जेंस ऑफ 5 इंडिकेटर्स, उसमें भी कोई एक पांचों में फेवरेट निकलता है क्या आपका? You can say 1818. Awesome. Next question. Okay, Aditya sir, growth versus valuation, cheap valuation पे buy करना, तो आप growth देख के buy at any price वाला जो होता है कि वो देखोगे, या फिर जब cheap मिलेगा जो buy on dip strategy होती है वो मिलेगा? सो वैल्यू विदाउट ग्रोथ वैल्यू ट्रैप होता है, ठीक है. सो आई नीड, मतलब स्वीट स्पॉट होता है कि आपको वैल्यूएशन भी मिल रही है और ग्रोथ फैक्टर जो मार्केट में प्राइस्ड इन ना हो वैसा स्टॉक मिल पाए, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन. बट मार्केट ओवरऑल करेक्ट हुआ है एकदम ही ज्यादा, तो वैल्यू में देख रहा हूँ. बट इन जनरल नॉर्मल मार्केट में वैल्यू विदाउट ग्रोथ काम की नहीं है, वैल्यू ट्रैप्स होते हैं. तो या Awesome. फिदाई सर, वन फंडामेंटल मेट्रिक दैट यू सी कि अगर ये है तब तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इसको, बाकी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी कितना भी अच्छा बोल लो, इसमें ये अगर फंडामेंटल्स ये चीज बोल रहे हैं तो आई वोंट गो फॉर इट. Well, I look at net profit to enterprise value. I don't look at market cap to enterprise. Market net profit to market cap or earnings per share. What I look at is net profit to enterprise value when it is available at very cheap valuations. Let's say net profit is 200 crores and enterprise value is 1,000 crores. Then I would be happy to buy this stock. But if I get it at means maybe 600 crores of enterprise value, nothing like it. But then here one needs to understand that there are stocks which are holding companies, so there could be some misunderstanding about this. So one needs to be a little careful that you should not confuse it with holding companies also. Now what I would avoid absolutely is very high large equity capital with very large float. Right. Awesome. ठीक है. So we've got our basics right now. एक final before we conclude, we have just 5 minutes left. तो दोनों ही speakers से same question. One final concluding remark or advice that you'd like to leave with our audience tonight. So आदित्य सर, आपसे शुरू करते हैं. Since फिदाई सर से हमने podcast शुरू किया था, तो पहले आपसे अब पूछते हैं advice. श्योर. ये देखिए, मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये बोलना चाहूंगा ऑडियंस से. सपोज आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते एंड ट्रेडिंग इज अ रियली टफ गेम. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो बहुत ही बेटर जोन में रहते हैं, ठीक है. ये ऑनेस्ट ओपिनियन मैं बता रहा हूँ. आप जो है आपकी साइकोलॉजी, और अगर आप कर रहे हैं किस टाइप की ट्रेडिंग आपको सूट करती है वो बहुत जरूरी है. मैं एक इन्वेस्टर था, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स में आया था एंड वो भी इंट्राडे में मैंने स्टार्ट की थी. तो इनिशियली आई फेस्ड अ वेरी रफ पैच एंड एक लर्निंग कर्व होता है. इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, आप देखिए आपके टाइप ऑफ साइकोलॉजी को सूट क्या करता है, आपके टाइप ऑफ आप जॉब क्या करता है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या सूट करता है वो करना चाहिए आपको, रेदर देन कि ये यहाँ से पैसा कमा रहा है ये करता हूँ, कल वो यहाँ से पैसा कमा रहा है. अभी करेंसी में भी कमाना है लोगों को, कमोडिटी में भी कमाना है, डेरिवेटिव्स भी करना है, एक्सपायरी ट्रेडिंग भी करना है, यूएसडी एनआर भी करना है. सब करने जाओगे कुछ नहीं होगा. मैं तो बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर आप इंडेक्स पे स्टिक करें, एक मैक्सिमम 2 इंडेक्स पे आप स्टिक करिए. जैसे मैं खाली निफ्टी पे स्टिक करता हूँ, राइट. उससे ज्यादा करने को जाता हूँ तो मुझे सूट भी नहीं हो पाता है. एक्सपायरी ट्रेडिंग करता हूँ मैं मेनली, एंड इंट्राडे में भी एक टाइप की
स्ट्रेटेजी में फर्स्ट आप मास्टर करो, देन आपको मूव करना दूसरी स्ट्रेटेजी में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो चीज बोलूंगा। एंड अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते दैट्स फाइन, बट इन्वेस्टिंग के बिना, इन्वेस्टिंग इज अ मस्ट, इन्वेस्टिंग तो हर एक को ही करनी चाहिए। ट्रेडिंग कैन बी अ साइड इनकम, या तो आपको करना है तो कर सकते हैं, बट या Awesome. Fidai sir, आपसे भी एक one final concluding remark before we let you go, please. Well, I would say find a good teacher. Don't let market teach you, because you will always be in doubt even after you have learned something from market. But if you get a right kind of teacher, and if he can just give you a right direction, best thing that can happen to your life, right? Another thing is discipline. Never means leave your discipline at any cost. I have seen whenever you means diverge away from discipline, you will always be under stress. You will be, even if you make profits, those profit will not be means long lived. You will give away everything to the market. So have a system. It could be simple as investing in 10 years, or doing a sipping, or doing Mrityunjay kind of market, kind of Nifty ETF kind of thing. Whatever you do, define what you want to do, be clear about it, and have a stop loss at any cost. Because at some point, if you don't have a stop loss, then you can have cases like Reliance, especially the Anil Ambani group companies, or Yes Bank or DHFL kind of scenario. Like, see, these companies were top quality companies, but then still people lost their shirt, pants, everything. So very important to keep a stop loss. Maybe they would be deeper if you're investor, as I told you, but here the money management will come into play. So that's why I said discipline. So I hope that this whole interaction is fruitful for our listeners, and I hope it has benefited everyone. I have enjoyed listening to Aditya also. So thank you, Aditya, for your time and your knowledge. Thank you to both our speakers. And before I let you go, एक और मेरी request कि please do allow us to host you again, Aditya sir, Fidai sir. There's so much Sure, more to learn from you. एक session, it's just not enough for it. Let's hope so, inshallah. I can always anytime. Yeah, always welcome. Thank you so much. Thank you so much for joining us, both our guests tonight, and the beautiful audience who has been there throughout. We have over 230 people listening right now. All thanks to the wisdom and the kind-heartedness through which हमारे guest ने आज share किया है अपना wisdom हमारे साथ. I really can't thank you enough. From the bottom of my heart, please accept my gratitude. I hope everybody has a green day tomorrow in the market and a very good night tonight. So once again, thank you. Bye bye. Thank